हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो एक और दिन हम आ गए हैं आउटडोर में, और इन दिनों आपने वीडियोस में देखा होगा कि एक चीज़ कॉमन है, कभी भी बारिश आ जा रहा है, लेकिन हमको तो आउटडोर करना है ना। तो आज एक और दिन आ गए हैं आपके लिए वीडियो लेके। तो आज मैं सॉफ्ट पेस्टल में आउटडोर करने वाला हूँ, और अभी मैं आपको आज का स्केप दिखा दूँगा। What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to तो गाइस, जैसा मैंने कहा था, आज का आउटडोर में सॉफ्ट पेस्टल कलर्स में करने वाला हूं, और यहाँ पे मैं कैमलिन के सॉफ्ट पेस्टल यूज़ कर रहा हूं। दोनों ही सेट कैमलिन के हैं। तो चलिए अपना आउटलाइन वगैरह कर लेते हैं, फिर आपको कलरिंग भी दिखाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैं पेस्टल पेपर यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मॉन्टेवेल कैंसन का पेस्टल पेपर यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें मैं सॉफ्ट पेस्टल से ड्राइंग को बनाऊँगा। तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो चलिए अपना ड्राइंग शुरू करते हैं।
And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. So what's gone is gone. Now we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. That's la la life. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. So what's gone is gone. Now we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. That's la la life. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. तो गाइस मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने सॉफ्ट पेस्टल से ये वाला ड्राइंग बनाया, तो इसे परमानेंट करने के लिए फिक्सेटिव स्प्रे करना पड़ेगा। और मेरे पास स्प्रे है, मैं लेके आया हूँ, तो मैं इसे स्प्रे कर दूँगा। और उससे पहले मैं मास्क पहन लूँगा, क्योंकि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है इसे स्प्रे करने के लिए। तो चलो मास्क पहन लेते हैं, फिर स्प्रे करते हैं। तो गाइस मैंने मास्क पहन लिया है, तो चलिए फिक्सेटिव स्प्रे करते हैं अभी। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, फिक्सेटिव अप्लाई करने के बाद थोड़ा डार्क हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पहले जैसा हो जाएगा, इतना डार्क नहीं रहेगा। तो गाइस मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है और मैंने फिक्सेटिव वगैरह स्प्रे कर दिया है और आपको दिखा भी दिया है फाइनल ड्राइंग की कैसा बना। बाकी आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो पता है ना क्या करना है, वो लाल वाला बटन दबा के घंटी को बजा देना, ठीक है, मतलब सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।